ताली नहीं, लय अलग हो जाएगा। जय शिव शंकर औघर रानी, भाल चंद्रमा त्रिशूल पाणी, भाल चंद्रमा त्रिशूल। जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह चल रहा है, सीधा रुख कर रहे हैं। फहद इकराम कुरैशी, सोमेश खंडेलवाल, कोंड्रप्पू अभितेजा, संग्राम केशरीपाल, गौरव पारिक, अंकित कुमार सिंह, अम्बेश बिश्नोई, मोहित प्रताप सिंह, and Avinash Kumar. Thank you, sir. By the authority given to me by the Board of Management as the Chancellor of the University, I confer on you the degree of Masters of Business Administration for which you have been found qualified, and I charge you that ever in your life, by word or by deed, you prove yourself worthy of it. तो जयपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह चल रहा है। राज्यपाल मार्गरेट अलवा इसमें शिरकत कर रही हैं। बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से खबर है, आज होने वाली जेपीसी की बैठक रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। 2G मुद्दे पर होनी थी जेपीसी की बैठक, जो रद्द कर दी गई है। जिस तरह से विपक्ष हमलावर था और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा था, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी थी, लेकिन खबर यह है कि जेपीसी की आज होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। तो जेपीसी की आज होने वाली बैठक रद्द की गई है। 2G घोटाले को लेकर जो जेपीसी की रिपोर्ट है उसको लेकर यह बैठक होने वाली थी, लेकिन एंड मौके पर इसको रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी है। गतिरोध देखा जा रहा है इसी मुद्दे को लेकर, और जेपीसी की आज होने वाली बैठक
रद्द कर दी गई है। जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने लामबंदी की है, बीजेपी जिस तरह से हमलावर है, इस पूरे रुख को लेकर खासतौर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री को क्लीन चिट जिस तरह दी गई है, खासी नाराज है बीजेपी। जबकि इस रिपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण शौरी को जिम्मेदार करार दिया है, जिससे बीजेपी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तो आज होने वाली जेपीसी की बैठक रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे जयपुर का, जहां पर जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह चल रहा है। Shri Bharat Singh Singhania, Chancellor J.K. Lakshmipat Singhania University, Dr. Upender Dhar, Vice Chancellor of the University, professors, teachers, parents, and my dear students. This is indeed a moment of pride for all of you, the students receiving their hard-earned degrees, the teachers and parents who have guided and encouraged them, the management and the founders rejoicing at the first convocation of the university that they have so painstakingly established and developed. Breaking convention, I am here to rejoice with you. Congratulations to everybody on this first milestone of your institution. All journeys have starting points. Yours began on the face of it on September 15, 2011, when your university was born under a state act. It is to be noted with appreciation that the university, promoted by the JK organization, one of the leading industrial conglomerates of the country, got its act together promptly, launching 2 courses in business management and in engineering, and is set on a path-breaking journey of growth. The university, spearheaded by people who have achieved notable success in the world of business, seeks to equip tomorrow's leaders with appropriate skills to succeed in a fiercely competitive world. Your watchwords reflect your profound pragmatism. And I quote, "It's not just what you know, but what you do with what you know that separates success from failure, turning knowledge into wisdom and information into workable ideas." About 125 years ago, a visionary, Swami Vivekananda, cautioned us against giving primacy to information, science, wisdom. He said, and I quote, "Education is not the amount of information that we put into your brain and runs right there undigested all your life. You must have life-building, man-making, character-making assimilation of ideas.
I would certainly today like to change the man-making into perhaps people-making, because women are very much part of it all today. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you have more education than anyone who has got by heart a whole library. Unquote. It is gratifying to note that you are inspired by late Lala Lakshmipad Singhania's quest to blend entrepreneurial success with humility. As he said, and I quote, "To my mind, education is not only reading and writing and knowing a number of subjects. Education is education for life. That is, to make a person more understanding and humble. Vidya Dadati Vinayam," is what he said. Sri Singhania also reinforced the need for civilizational continuity when he said, "We seek a society which is proud of its past, conscious of the present, and full of hope for the future. A society in which every citizen would be equally conscious of his rights and responsibilities." Unquote. As India stands on the cusp of dramatic changes in its economic profile, with many seeing the country as a potential global economic power, it need hardly be emphasized that such changes have necessarily to be rooted firmly in an educational system that creates men and women of character, courage, and compassion. It is therefore no surprise that the surge in economic growth is being accompanied by a surge in educational institutions. Skilled manpower, or should I say human resource, is the sine qua non for a strong economy. Growth will reinforce education, which, other factors being favorable, will reinforce growth in what one hopes becomes a positive cycle. But amid all the talk of economic growth and gearing up all our efforts to worship what the economists rightly call the animal spirit, one should also pause to reflect, is that all? Shouldn't humans, economic agents with an animal impulse, rise to a higher, shall I say, conscientious consciousness? What do we really mean by civilizational continuity? Economic growth is necessary to uplift vast sections of our population from the trap of poverty. But as any number of studies testify, growth per se does not alleviate poverty. I would also add, education or enhancement of skills per se do not necessarily make a person socially more responsible. I have also wondered at times about what makes us both rich and selfish. Does it have something to do with the very motivation, the driving force of modern economies? Profit, private profit. How can we blend the interests of the entrepreneur with those of the consumers, the interests of the rich with those of the poor? Of course, these questions have engaged the attention of many an economist, policy maker and statesperson. The jury is and will continue to be out on this. But these questions need to be addressed innovatively by the young, the new generation, by you. Here I'll share with you bright young students, academics and highly successful people
a story from the world of the disabled or differently able. Last Monday, I had an opportunity to inaugurate a festival of short films on disability. One of these films portrayed a group of 10 disabled children at the start of a race. Naturally, the one who succeeded in fierce competition ahead of all others would be the winner. As the race began, 2 of these children fell down. The remaining 8 stopped, came back, helped the 2 kids onto their feet, and together, hand in hand, they all touched the finishing line together. All were winners together. Perhaps we, the able, need to learn a lesson or two from the disabled, the differently able. Perhaps we need to redefine notions of business and economic success. Can we as a society think of ways to empower ourselves with different norms of motivation and collective working? Can we in our business schools evolve models that emphasize not just private profits but collective good? Not just entrepreneurship but social commitment as well. How can the business model of the Jaipur Foot, for instance, be replicated on a mega scale for any number of other necessary goods and services? Do we need to return to serious reflection on Gandhiji's economic perspective and his emphasis on the wealthy seeing themselves as trustees of society's wealth? Haven't many prominent business persons round the world, having made billions, zillions, ended up with a realization that they needed to give much of their wealth back to society in charity or other forms? Isn't it time for fortunate or successful entrepreneurs to give something back to society as they move along the path of success? I think we need to temper our business models obsessed with fierce competition and survival of the fittest in Darwinian sense to give due recognition to what I would call the 3 C's: care, compassion and cooperation. You young people are ready to venture out into the world of real business and entrepreneurship. What would be your tribute, your Guru Dakshina to your alma mater? The expression alma mater in Latin means nourishing mother. In ancient Rome, it was used as title for various mother goddesses. Over time, alma mater came to refer to your school or your college. Thus, humanity across millennia, countries and languages has seen knowledge, wisdom and the feminine in a continuum. Your alma mater values civilizational continuity and humility. I trust that as a tribute to your educators, your institution, you will nurture the facets of our civilizational history that accord primacy to these values. I wish you all success. May your lives be a celebration of your achievements and a meaningful tribute to your alma mater and indeed your motherland. May God bless you all. Thank you. चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। बंगाल सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। बात करें बड़ी खबर की। आज होने वाली जेपीसी की बैठक स्थगित कर दी गई है। 2G मुद्दे पर होनी थी जेपीसी की बैठक। बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। सहयोगी आसित कुणाल मेरे साथ जुड़ गए। आसित, जिस तरह से बैठक स्थगित की गई, कोई खास कारण? आसित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 बिल्कुल। जिस तरह से बैठक स्थगित की गई, कोई खास कारण है इसका? एकदम देखिए, औपचारिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि चूंकि तृणमूल कांग्रेस के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंबिका बनर्जी, जो हावड़ा से एमपी थे लोकसभा के, उनका आज सुबह निधन हो गया है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद कमेटी में सदस्य थे, उन्होंने मांग की थी कि उनके पार्टी के सांसद का निधन हो गया है और उन्हें उनकी अंत्येष्टि में भाग लेना है। ऐसे में एक सदस्य की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया था, उन्होंने मांग की थी और इसको जो चेयरमैन है टीसी चा को उन्होंने मान लिया है। तो औपचारिक तौर पर यही बताया जा रहा है कि चूंकि एक परंपरा रही है, सदन का कोई जो वर्तमान सदस्य होता है उसका निधन होता है तो न केवल संसद की बैठक उस दिन स्थगित की जाती है, बल्कि जो स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, उनकी भी बैठक रद्द की जाती है। तो जाहिर तौर पर औपचारिक तौर पर यही बताया जा रहा है, मगर कहीं न कहीं इसके पीछे एक राजनीतिक पहलुओं पर भी नजर डाली जा रही है। क्योंकि कांग्रेस के पास कहीं न कहीं जो जेपीसी में भी वर्तमान सदस्यों की संख्या है, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कुछ समय कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से और यूपीए की तरफ से समय ले लिया गया है ताकि इस मामले पर जो आज टकराहट होनी थी, एक तरीके से घमासान होना था। जेपीसी की रिपोर्ट आज मंजूर होनी थी, अंतिम रिपोर्ट, उसकी ड्राफ्ट कॉपी पड़ चुकी है, मीडिया में लीक भी हो चुकी थी। तमाम चीजों को लेकर आज काफी हंगामेदार ये बैठक होनी थी 3 बजे। न केवल जो रिपोर्ट की कंटेंट है उसको लेकर विवाद है, उसमें भाजपा का यह आरोप है कि वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम कि कुछ रिपोर्ट लीक किस तरीके से हुई है, सदस्यों को मिलने से पहले मीडिया में रिपोर्ट लीक हुई है। तमाम चीजों को लेकर आज बैठक में काफी हंगामा होना था, मगर जैसा मैंने आपको बताया बैठक फिलहाल चल गई है। बड़ी खबर यही है और बताया गया कि शायद अब ये बैठक अगले सप्ताह हो, क्योंकि जहाँ तक सदस्य हैं वो जो सप्ताह अंत पे वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बैठक का बिल्कुल। तो कल जब बैठक होगी क्या कुछ होता है उसमें देखने वाली बात होगी। फिलहाल बैठक स्थगित कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार।
इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंदर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंदर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दिल्ली में पूर्व जज के आवास पर बदमाशों का हमला, विरोध करने पर बेटे की कर दी हत्या, जेवर नकदी ले हुए फरार। लद्दाख में चीनी घुसपैठ कतई बर्दाश्त नहीं, विदेश मंत्री ने कहा शांति से मसला सुलझाने के जारी हैं प्रयास। यूपी में बेखौफ हुए बदमाश, नोएडा में सपा नेता की हत्या तो गाजियाबाद में सीआईएसएफ कांस्टेबल और पत्नी का कत्ल। भरतपुर से 2 रिटायर्ड फौजियों ने अपने परिवार पर फायरिंग कर हुए फरार, 3 की मौत। राजसमंद के चारभुजा में बस इनोवा की टक्कर में 3 की मौत। और आज रात 11:32 पर लगेगा वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण, देश भर के अंतरिक्ष प्रेमी देख सकेंगे चंद्र ग्रहण का नजारा। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक पूर्व जज के आवास पर धावा बोलकर बदमाशों ने जेवर और नकदी लूट ली। वहीं विरोध करने पर बदमाशों ने जज के बेटे की हत्या भी कर दी। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी प्रभाकर के मुताबिक घटना करीब 2:30 बजे की है, जब कुछ नकाबपोश बदमाशों ने भूतपूर्व न्यायाधीश एसके दत्त के आवास में घुस गए। बदमाशों ने दत्त दंपति और उनके पुत्र अनिमेश को बांध लिया और घर में रखी ज्वेलरी और 25,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने अनिमेश की हत्या कर दी। घर में ये जो 3 लोग थे, उनके हाथ पांव और घर में ही जो कपड़े थे या चादर के टुकड़े थे उससे उनको बांधा और इनसे ज्वेलरी 25,000 रुपए कैश लेके गए हैं। इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश श्री अनिमेश दत्त को जो उन्होंने बांधा था, ऐसा लगता है कि बांधने के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। आज हनुमान जयंती है, चलिए इस मौके पर रुक करेंगे हम जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर, जहां पर इस वक्त महाआरती जारी है। तमाम भक्त मौजूद हैं खोले के हनुमान जी मंदिर में। जयपुर स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त महाआरती चल रही है, तमाम भक्तगण मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं जो कि आरती कर रही हैं। इस वक्त महाआरती चल रही है। तो इस वक्त काले के हनुमान जी मंदिर में महाआरती का दौर जारी है। हनुमान जयंती है आज और इस मौके पर तमाम भक्त मौजूद हैं। एक मान्यता भी है इस मंदिर की, जिसके तहत तमाम भक्तगण मौजूद हैं मंदिर में और इस वक्त महाआरती जारी है।